The concept of human rights. इंडिया में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम तरीन इस पे जजमेंट्स हैं वो इसके तारफी सेक्शन में वो मैं आपको पहले नोट करवा दूं और फिर आगे मुख्तसरन इस पे बात होगी। AIR 2009 जर्नल सेक्शन एट पेजेस 7, 8, 22, 23 एंड AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 4, 5, 6। इनमें जो हेल्ड किया अदालत ने उनकी चंद लाइंस मैं आपसे शेयर करता हूं और उससे इस कंसेप्ट को समझने में काफी आसानी होगी। ह्यूमन राइट्स आर दोज इररिड्यूसिबल मिनिमा which belongs to every member of the human race. When pitted against the state or other public authorities or groups and gangs and other oppressive communities, being a member of the human family, he has the right to be treated as a human person. Once he takes birth or is alive in the womb, with the potential title to personhood. यहां पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, अशरफुल मखलूकात। यानी अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की, जितनी भी क्रिएशंस हैं, क्रिएचर्स हैं, उनमें सबसे सुपीरियर, सबसे अफसल, दैट्स वाई द नोमेनक्लेचर इज डिनोटेड एज अशरफुल मखलूकात। बीइंग ए ह्यूमन, कता नजर इसके वो काला है, वो गोरा है, वो किस नस्ल से है, किस खानदान से है, हसब नसब क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबा, इन हिज लास्ट एड्रेस द होली प्रॉफिट वाज प्लीज्ड टू से कि किसी शख्स पर, किसी शख्स को कोई फौकियत नहीं है किसी बुनियाद पर, रंग, नस्ल, मजहब, वटएवर, जितनी मर्जी गिनती कर लें, किसी को किसी पर कोई सुपीरियरिटी नहीं सिवाय पाइटी के, तकवा के। हर शख्स को शर्फी इंसानी हासिल है, वो औरत हो, वो मर्द हो, वो काला हो, वो गोरा हो, वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो कोई भी मजहब, किसी भी नस्ल का हो, इंसान होना ही बहुत बड़ा शर्फ है, पहला शर्फ है। उसकी डिग्निटी, उसकी ऑनर, उसकी जान, उसकी माल, उसके तमाम जो राइट्स कनेक्टेड विद लाइफ हैं, उसके रोजगार और उसके दीगर फ्रीडम जो एक इंसान के लिए बुनियाद, दीज आर टर्म्ड एज नेचुरल राइट्स। वो कोई सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो बादशाहत हो, डिक्टेटरशिप हो, जमहूरियत हो, वो कोई सा भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उस इनको नेचुरल राइट्स कहा जाता है, जो पैदाइशी तौर पर एक शख्स को हासिल होता है, इनसे महरूम नहीं किया जा सकता। आज के दौर में कंसेप्ट ऑफ स्टेट जो है वो ग्रेजुअली एवोल्यूशनरी उसमें चेंज आया है। जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आईन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो उस रियासत में बसने वाले अफराद हैं उनका मुआहदा है रियासत के साथ। रियासत इंश्योर करती है उनके राइट्स को। कौन से राइट्स को? नेचुरल राइट्स को।
क्या आज की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। वो इंसानी हकूक जिनसे किसी तौर से डिन्यूड नहीं किया जा सकता, महरूम नहीं किया जा सकता किसी इंसान को। इस जमन में डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में, और ग्रेजुअली जैसे एक रियासत ने वेलफेयर स्टेट का ओढ़ा, अपना रोल अज्यूम किया, तैसे तैसे इसके उन राइट्स में इजाफा होता गया। आज के दौर में अगर बिजली, लाइट, गैस, अमेनिटीज ऑफ लाइफ जो हैं, उनको भी राइट टू लाइफ के साथ एम्बेडेड कर दिया गया कि इसके बगैर अच्छी लाइफ का राइट टू लाइफ, लाइफ का जो है राइट टू लाइफ जो है, ये सिर्फ मैज एनिमल लाइफ नहीं है कि मैं जिंदा रहना है। लाइफ मीन्स तमाम राइट्स के साथ, वरना इसकी नफी हो जाएगी। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगेन मैं मिसाल कोट करूंगा, फेमस मिसाल है होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आपके पास कुछ लोग सिफारिश लेकर आए, किसी चीफटेन ने, किसी सरदार ने कोई अफेंस किया, थेफ्ट का एलिगेशन था, तो बड़े जो दूसरे उसके सरदार थे वो आए और उसके लिए नरमी की इस्तदा की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नापसंद फरमाया। आपने फरमाया कि लिसन, अगर मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ये जुर्म करती तो मैं उसको यही सजा देता। दिस वॉज ए मैसेज लाउड एंड क्लियर टू द वर्ल्ड कि इन द आई ऑफ लॉ देयर इज नो डिफरेंस। सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट जहां पे कॉमन लॉ डेवलप हुआ। दुनिया ने इससे सीखा कि शर्फ इंसानी बराबर है, तमाम इंसान बराबर है, लिहाजा दे मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। जहां पे कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, समझें कि वहां पे ब्रीडिंग फैक्ट्रीज लग गई हैं जो दहशत गर्दी पैदा करेंगी। दहशत गर्दी पैदा करने की सबसे बड़ी वजह रूल ऑफ लॉ का ना होना है। अब मैं चंद लाइंस इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने अर्ज करूंगा, जो मैंने फैसले आपके सामने रखे, उनमें जो होल्ड किया अदालत ने। बियॉन्ड रिलीजियस सुपीरियर्स एंड क्राउन्ड heads, there were system of natural law which embodied reason, justice, and universal ethics. Therefore, the basic premise to remember is that the human rights are not the gift of any political sovereign through legislation or any other edict, but are rights inherent in human existence without reference to man-made artificial divisions based on color, race, sex, religion, etc. Non-derogation of some basic rights in a civilized society is based on this premise. It is further held, human rights is a dynamic concept and endeavors to adapt itself to the needs of the day. Further, human rights attain new dimensions and connotations with the march of the society. Although the expression human rights emerged after Second World War in international charters and conventions, its concept is as old as the ancient doctrine of natural rights.
founded on natural law. Ever since the beginning of civilized life, it was noticed and came to be asserted that there were certain rights, such as right to personal security, personal liberty, and property, which were superior to rights created by human authorities and were of universal application to men of all ages. And these rights could not be violated by the authorities of the state. Later, they were codified into national constitutions, international covenants, international conventions, and the Human Rights Acts. The framers of the Indian Constitution as well as of the Pakistan constitutions were much influenced with the deliberations which were going on for the Universal Declaration of Human Rights, that they incorporated most of the rights enumerated in the Universal Declaration of Human Rights as fundamental rights and directive principles in the Constitution. While the fundamental rights guarantee the rights and liberties of the individual against unreasonable and arbitrary action of the state, the directive principles provide for attainment of certain economic and social goals which would fulfill the basic needs of an individual. Thus, the status of human being and human rights has been placed in a high pedestal in the Indian Constitution on almost all aspects of like civil, political, social, cultural, and economic rights. The fundamental rights guaranteed under the Constitution have also been observed by the Supreme Court as a modern name for what we have been traditionally known as natural rights. The expression human rights is defined to mean the rights relating to life, liberty, equality, dignity of the individuals guaranteed by the Constitution are embodied in the international covenants. The most important current issue, which is a challenge to human rights, is terrorism, about which the Indian Supreme Court, in its case, People's Union for Civil Liberties versus Union of India, reported as AIR 2004 Supreme Court 456. It was held in the end of the lecture. मैं ये आपके सामने चार लाइनें रख दूं. The protection and promotion of human rights under the rule of law is essential in the prevention of terrorism. Terrorism often thrives where human rights are violated. The lack of hope for justice provides breeding grounds for terrorism. In all cases, the fight against terrorism must be respectful to the human rights. Inshallah ta'ala, very soon we will meet together again on the same topic. ये introductory concept है. इसके बाद after clearance of concept, we will discuss one after the other fundamental rights guaranteed by the constitutions of Pakistan as well as that of India, which are within the same parameters as provided by the Universal Rights Commission. Thank you very much. Please keep watching and guiding me by your valuable comments. Allah Negeban.